Assalamu alaikum. This session is being recorded. This is Sir Simo Rahman. Today is 19th of November. This is your first spoken session, and I have something written for your help on the screen because today all of you are going to share your routines, what you do every day. Different people have different routines. I have different people from all over the cities of Pakistan. So it's quite interesting. You have to start with your short introduction, just in two, three, four sentences, like your name, from where are you? Are you a housewife or a working lady? And if you are currently studying, what are you studying? What have you studied? Then start your routines. That my daily routine is. You, if you look at the screen, I'm giving you 30 seconds. Look at the different vocabularies that if you may use them, they may be helpful for you. You can also take a screenshot of these vocabularies because tomorrow you have to present a directed writing in your spoken class. Tomorrow you have to write a presentation on daily routine. Today you have not written anything. You have to give presentation off the cuff. Off the cuff means without any preparation. You have not prepared anything. But everybody has to try. Everybody can speak, I'm sure. But tomorrow, whatever you write, you will present before the class. These vocabularies will help you. Just after the class, I will send you two, three videos. Watch those videos. Listen to those people. They will help you out to write a very good presentation on daily routine. Right? Yes. Please raise your hand. Whoever wishes to start first, raise your hand. पहले वो लोग हाथ उठा लें जो इस क्लास के हैं तो ज्यादा बेहतर होगा. There are so many people who are on observation, so I want first students to participate in this class. जो 9 to 10:30 के स्टूडेंट्स हैं. Yes, आमना. जो लोग डेमो पर है, they can listen. If I get time by the end of the session, I will give you a chance to speak. Yes, Amna. Start. Hi everyone, my name is Amna. Uh, I'm from Lahore. I have done my MSc in Tourism and Hospitality Management. I'm working lady. I'm taking IELTS class from Sir Haseeb. Uh, if सर अब मैं डेली रूटीन पे जाऊं अपनी या आफ्टर Yes, you can. इंट्रोडक्शन. It's enough for your introduction. Start your routine. Oh, I wake up at 5:45 a.m. In the morning. First I offered my Fajr Salah, and then I take a shower. Uh, After shower, I recite the Holy Quran, and then I have to prepare myself for office. Uh, before I leaving for office, I just go through my all stuff in my room. I just clean and arrange my things in the room, and then I left home for the office. uh, uh, सर और डिटेल में सारा कुछ No, no, पूरे डे की बताऊं. you have maximum 2 minutes. Now you have only ओके. 30 seconds. ओके. And then when I got office, I just remember, I just look my schedule, daily schedule, and I log in my computer. Uh, I just look all of my emails and the things I have to do in the on a day. Uh, after office, I come to home and just I prepare myself for the IELTS class, and from 4 to almost 9 o'clock, I
I read the Practice. IELTS book. Yes, I practice my IELTS books and listening classes too. बस I think थोड़ा और. Oh, it's okay. That's great. कल आप बहुत अच्छा बोलेंगी. That's great. You have done इंशाल्लाह. good. Yes, Kiran. Hello, sir. Hello. My name is Kiran. Today I'm share my daily routine. I wake up at 9 o'clock. Then I take a shower. Then I do worship. Then I drink a tea. Then I eat dinner with whole family. Then I go to uni 12 o'clock. Then I arrived at home 7 o'clock. Then I then I drink a tea. Then I do worship 8 o'clock. Then I prepared then I prepared a meal. Then I take a class. Sir Hasib, sir, I'm right. Yes, you are right. Very good. Keep. Okay. Then I take a class and English. Then 9 to 10:30. Attend to Sir Hasib class. Then I eat a then I eat a dinner with the whole family 11 o'clock. Then I using mobile 1 hour 11 to 12 hour. Then I read uni work assignments, and then I go to sleep 2 o'clock. That's That's it, great. sir. Thank you very much. Your presentations are being recorded, right? And I am not interrupting anyone. I am not telling anyone the mistakes which you are making. I want you to speak without fear, right? You are speaking absolutely right, right? So there is no harm in making mistakes. Yes, Zara. Walaikum salam. Walaikum salam. सिग्नल्स नहीं आ रहे. ठीक है, ज़ारा भी आपके सिग्नल डाउन है. नेक्स्ट, रेज योर हैंड प्लीज. नेक्स्ट. I wake up at 5:30. Raise your hand. When you raise your hand, I will turn on your mic. Yes, Shadab. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. This is Mohammad Shadab, student of online language class with you in night session. I work for the company as manager finance since 2013. My daily routine is I wake up early in the morning and do offer namaz fajr, and then recite Holy Quran, and then do exercise. And after that, I take breakfast, and after that, I go to my office. And then I have to attend many meetings regarding my work. And then at 1 p.m. I take lunch, and after lunch I offer namaz zohar, and then do my work, office work. I feel from office at 4 or 5 p.m. After reach home at 5 o'clock. After that I play with my son, and then offer namaz asr. After namaz I have tea and read English book or any book I want. And after namaz maghrib, isha, and dinner, I take sleep early at night. Thank you. That's very good. I am also focusing on your mistakes. I will deliver my lecture. I may deliver tomorrow in your spoken class related to spoken. I will deliver a lecture that will help you
and you will recall, oh yes, I said this. ठीक है, मैं हर बच्चे की मिस्टेक्स अपने दिमाग में महफूज करता जा रहा हूँ. Yes, next. Next, जो पहले इस क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो लाइक दे मस्ट पार्टिसिपेट फर्स्ट. तानिया, शुमाइला, महविश, सदफ, नूर, सदफ खान, yes, Sania Yusuf. Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. This is Sania Yusuf, and I am from Narowal. My daily routine is I wake up at then after praying namaz, I go to sleep. Then I wake up at 10 a.m. almost, and after wake up and after breaks, I do some I clean up and for the work. When I'm free from work, uh, I am free from work. Uh, then um, then I do work of my English language course, and also I have started social media marketing course, and also do the work of this class. And after praying Asr, Zohar, Asr, and Maghrib namaz, I cook dinner. After dinner, I take your class. Mm, That's all. That after that you sleep. After my class, there is no other work. But after your class, my daily routine starts. After your class, my daily routine starts. I start teaching from morning 9:30 onwards. Then I get free at 10:30. Almost 13 hours a day I teach online. Yes, next. Very good, Sania. Very good. आपके signals थोड़े drop कर हो रहे थे. That's why I faced problems. Yes, next, please raise your hand. बाकी लोग कहाँ हैं आज? ये जो इस क्लास की जो स्टूडेंट्स लाइक व्हाई आर दे नॉट रेजिंग देयर हैंड्स? ज़ारा ट्राई करें बेटा, आपके सिग्नल्स अगर बेटर हो गए. ज़ारा, Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम. That after that Sabra Ali. Sir, नहीं, तुम्हारे सिग्नल्स अभी भी जैब हुए हैं. सर्दी wake जैब. up at 5:30 a.m. every morning. सर किसी टाइम ठीक हो जाते हैं, किसी टाइम फिर खराब हो जाती है. Which network are you using? सर जोंग. Zong. बस Zong ने ऐसी कहा था कि सब कह दो, आप कुछ कह नहीं पाते और Zong डिस्कनेक्ट हो जाता है. बाय टेलीनोर फॉर योर ऑनलाइन क्लासेस. टेलीनोर के ऊपर जूम का बड़ा अच्छा पैकेज भी है. मैंने सेंड भी किया था आप लोगों को. बाय टेलीनोर फॉर योर ऑनलाइन क्लासेस एंड यूज टेलीनोर. इट विल परफॉर्म बेटर. और मेरे ख्याल से 80 रुपए में पूरा हफ्ता निकल जाएगा आराम से. जूम के लिए, सिर्फ जूम के लिए अलग से पैकेज हो रहा है. ठीक है. यस, सबरा अली. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. This is Samra Ali. My daily routine is that I wake up early in the morning, then I recite my salah, then I have to ready for my university to attend the classes. When I come back to home, I have my lunch, then I take a nap. गुड, वेरी गुड. माइक बंद कर दिया बेटा आपने अपना.
Samra? सर बस यहीं तक अच्छा बोलना बस था। खत्म. Oh, that's very mini presentation हो गई है तो बड़ी. शुरू होते खत्म हो गई. Yes, Noor, Sadaf, Sana Kiran, Sarish, Shumaila, सब सो रहे हैं आज. Everybody is sleeping. They took admission in a spoken English course and they are listening. आज तो like this is your remember like in a spoken class I don't speak. I remain quiet, silent. I listen and my students speak. हिरा नदीम बहुत बेचैन हो रही है, बहुत बेचारी. जब से क्लास शुरू हुई है ना ये हाथ उठाई जा रही है. इसको सुनते हैं. यस हिरा स्टार्ट. नाउ आई लव टू लिसन. उसके बाद तैयबा. यस May I स्टार्ट. start, sir? यस. Assalamu alaikum, all my classmates and my respectable teacher. I am Hiranadeen. I am from Hyderabad. I am 20 years old and I am a student at Degree Government Girls College. First of all, I am thankful for my teacher because he gives me big opportunity. I perform my daily routine in front of my classmates. So I wake up at the time of Namaz Fajr and I go to washroom and get fresh. After then, I perform Namaz Fajr and put on my uniform and I take a breakfast and I go to college and after then I say to salam all my teachers and my classmates and after then I take all classes of college. I attend all classes of college and then I back to come and I come back my home and I use my mobile phone. Then after then I go to center and take a classes and after then I sleep. Okay. That's very good. That's very good, Hira. Thank you very much. thank you. Thank you. Yes, next. Raise your hand. Remember, like if you don't raise your hand, you are wasting your time. In this class, I don't speak. My students speak. Yes, Sarish from Karachi. डिस्कशन क्लासेस से तुम लोगों ने इतना तो सीख लिया होगा अब तक 4 हफ्तों में कि तुम लोग स्टार्ट कर दो बोलना. Sarish, turn on your mic. Yes. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Firstly, I would like to thank to give me the opportunity to share my daily routine with my colleagues and you. Firstly, I get up early in the morning on the time of Namaz Fajr. Firstly, I go to the washroom and fresh myself and perform namaz. After that, I recite a surah for 5 to 10 minutes. Rather the time I have. So after that, I prepare myself for going to school. I am a teacher, so I have to rest on school at 7:30. So I prepared myself for going to school, having breakfast, and giving salam to my parents, and then go to the school at 7:30. I rest school. My school timing off is 12:30. After that, I go to the another institute where I taking 2-hour classes of maths. After that, I came back home at 3 o'clock and fresh myself, having lunch. After that, perform namaz and taking rest. I slept for 2 hours. After that, I get up at 5 o'clock and perform asar namaz and doing some home activities like washing dishes and other activities and other work which are remaining for me. After that, on the Maghrib time, I spend after Maghrib, I sit with my family members, with my sister, spend some time with my sister. And after that, I am also the student of B.Ed. So
manage my time, and on the daily basis I give 1 hour for studying. And whenever the discussion classes of Sir Javed on the week of 3 days, I take it also. And rather than if the class is not taken, then I studied of my subject. And after that, on the Isha time, I make roti, and then Chapati. yes, roti, chapati, and then washing dishes. And at 12 o'clock, at 11:30, I go to the bed and sleep. That's very good. That's very good. That's very good. Actually, I want everyone to speak. But Sudha Charo, it's been 4 weeks. You guys have been studying, but I haven't listened to you. Believe in me, when you speak, I will start my work. डॉक्टर साहब आपकी बीमारी का कैसे इलाज करेंगे जब तक आप बोलेंगे नहीं? Your problem is spoken. Speak. Then I will analyze your problems. Then I will prescribe you the medicine. Yes, Tayyaba. Start. Well, Assalamu alaikum. First of all, sir, this is my first day in your class, Yes. and I am trying to learning many things from you, which I did not know or whether this is useful for me. Well, if I'm going to my daily routine, this is little bit lazy because I am neither a student nor a working lady. So I get up 11:30 a.m. in morning, and the first try of me is to sleep little bit more. But according to this timetable, I get up 11:30 morning and go to washroom, then brush up and get up fresh, and then come to my room again and have breakfast, only drinking milk. Then go out from my room and play with my pet. This is dog. And then I go to washroom and take shower and prepare myself for Salah, Zuhur Salah. And then giving time to my mother and also waiting for something to do, like go out with my mom for grocery or whether in family, and then waiting for Asr and Maghrib Salah, and then I go to gym for exercise after my Maghrib prayers, and then I give time to my family or watching movie or go outside or have drive and eat something from outside, and then came back to home. Uh, Actually, this is a little bit, boring routine nowadays because there is nothing to do. And then I mostly decide to watch a movie with my brother or a news or a little bit gossips. And then at 1:30 or at 2 a.m. go to sleep. And this is the routine which I probably use daily, you know. Okay, that's good. That's good. Good, good. Yeah. Yes, Sadaf. Sadaf Khan. Assalamu alaikum, sir. Alaikum salam. This is Sadaf Khan. I am a student. My daily routine is I wake up at 6 a.m. every morning. I get fresh and then I perform Fajr. And after Fajr, I have to ready for my uni. And after that, I do breakfast. And then go to uni at 8 a.m. And I came back to home at 3 p.m. from uni. And then I take some rest. And after that, I do some home chores plus my uni work. The last thing which I do is I take online English language class with Sir Hasib, and then I go to sleep. That's very good. रात में नींद आ Yes, जाती है sir. आजकल सदफ? Do you sleep easily at night or do you think about your English class? Yes, sir. रात No, सर मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ. तो सोते नींद आ Yes, जाती है sir. या अभी सोते हुए इंग्लिश Yes, के sir. बारे में कुछ आ रहा होता है दिमाग में? सर कुछ आ नहीं रहा आता? होता है. आ रहा नींद होता में भी देखती हूँ. है. गुड गुड. इसका मतलब आपने बहुत सीरियस ले लिया अपनी इस पढ़ाई. गुड. Yes, sir.
when it Thank starts you, sir. happening, that you start translating sentences while watching TV, when you are sleeping, you are thinking about translating sentences, it means that you have started learning because you have taken it on your mind. When you take something on your mind, it means now you are going to learn it, right? Yes. Next, after 14 minutes. Yes. Next, please hurry up. Who is left? कौन रह गया है? जिसने आज नहीं बोला तो वो फिर तो कभी बोलेगा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ. This is the 5th week. अगर कोई आज नहीं बोला, if you don't speak today, you will never speak. It's my prediction. It's my prediction. चले कुछ. Yes. ज़ारा ने शायद अपनी कलेक्शन चेंज कर लिया है. Yes. नो सर, मैंने कनेक्शन तो नहीं चेंज किया. फिर मैं आपको बोल रही थी कि मैं व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेज दूं सर. ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा. लाइव बोलने का एक अलग मजा होता है ना बेटा. आई लिसन एंड देन आई रिप्लाई. ओके सर. अब तो अच्छा, बस इंग्लिश आप बोलती हो तो आपके सिग्नल जैम हो जाते हैं, वैसे भी सही आ गए. यस, मुझे भी सब पता नहीं, जब मैं बोलती हूँ तो नहीं आवाज आती. शर्मा जाता है आपका मोबाइल. तानिया स्टार्ट. तानिया इज लेफ्ट एंड who is left? Please raise your hands. Aliza, Batul, Tania. Be quick. Be quick, please. Mavish, Rauf. Yes, Aliza. मैं सुनना चाहता हूँ. I want to listen everyone. Yes, Aliza, start. अलीजा, आपकी आवाज नहीं आ रही. हैंड्स फ्री निकाल दे, फिर आएगी आवाज आपकी. आपका हैंड्स फ्री निकाल दे, फिर बोले. ऐसा लग रहा है जैसे आपको किसी ने जो है वो कमरे में बंद कर दिया और हैंड्स फ्री बाहर है. ऐसी आवाज आ रही है. Anyone else? अलीजा की आवाज नहीं आ रही. अलीजा, ट्राई अगेन. Farhana, start your presentation on daily routine. Yes, sir. Yes, start, Farhana. Okay, sir. Sir, I wake up early in the morning, then I wash my face and brush my teeth, but then I get dressed and I take breakfast, and then I take a car and I get office, and I do my daily routine work. Then I have a tea break and I meet some colleagues, or I get back home. Then I watch TV and I take dinner and then I go to sleep at 12 noon. At 12 midnight. Midnight. Okay. Okay. Well, I listened to everyone today and everybody spoke well. I found many errors in everyone's speech. What you all have to do tomorrow, you have to write your routine. आज तो आप लोगों ने लिखा नहीं ना. You were simply speaking. कल लिखना है और क्लास से पहले मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है. Sir, I have written it. I want my every student to write. जब लिखेंगे
तो आपकी गलती आपके सामने आएगी। अच्छा, जब आप कल क्लास लेंगे तो हो सकता है उसके बाद व्हेन आई हैव टाइम या फिर संडे वाले दिन एक मैं वर्कशॉप रखूंगा, हाउ टू राइट प्रेजेंटेशन और डेली रूटीन। ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे जिसमें तमाम स्टूडेंट्स को इनवाइट कर लेंगे। टाइमिंग्स वुड प्रोबेबली बी 2 to 3। उसके बाद हमारी वोकैबुलरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो 2 to 3 या 1:30 to, मुझे 2 सेशंस तो चाहिए होंगे, काफी लंबी क्लास हो जाती है। 2 to 3 रख लेंगे, ठीक है ना। एंड इंशाल्लाह और संडे को मैं गाइड करूंगा कि हाउ टू राइट अ प्रेजेंटेशन, क्योंकि कल मेरा ग्रामर का टॉपिक भी बड़ा अहम है, उसमें भी जो चीजें पढ़ाऊंगा वो भी आप फिर प्रेजेंटेशन में ऐड करेंगे। एक बात मैं आपको समझा दूं, इफ यू मिस योर डेली लेक्चर्स, आज आपका लेक्चर था, आज आपने कुछ बोलने की कोशिश करी, आज आपकी सिर्फ गलतियां रिकॉर्ड हुई है। कल से अभी, अच्छा मैंने सुना लोगों को, आई हैव लिसन्ड, मुझे पता चल रहा है किसकी क्या कमी है, किसकी क्या प्रॉब्लम है, कौन किस तरह के एरर्स कर रहा है। अच्छा, अभी 2 चीजें मैंने महसूस की, ग्रामेटिकल एरर्स, लैक ऑफ वोकैबुलरी, ठीक है, एंड लैक ऑफ आइडियाज जनरेट नहीं हो रहे, शुरू होते खत्म हो गए। तो कल और परसों की क्लास आपको और आइडियाज देंगे कि हम सर क्या ऐड करें। तो इंशाल्लाह कल का जो सेशन होगा वो बड़ा आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगा। ये पूरा हफ्ता चल रहा है आपके लिए प्रेजेंट सिंपल पर, और कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ प्रेजेंट सिंपल हर तरफ से चल रहा होगा। एंड यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। ये जो आपकी वर्कबुक है, आपके पास एक वर्कबुक हमारी है ना, कहाँ गई वर्कबुक, ये अभी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। ये वर्कबुक जो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं ना, उनका रिजल्ट बाकायदा तौर पर देखा गया है, दैट्स वेरी पॉजिटिव। यूनिट 1 और 2 आप लोगों ने कर लिया है ईमानदारी के साथ। अब आप यूनिट 2 शुरू करेंगे प्रेजेंट सिंपल से, यूनिट 3। इसमें जो वोकैबुलरी आपको नए वर्ड्स नजर आ रहे हैं उसको वोकैबुलरी सेक्शन में लिखिएगा। कोई नया वर्ड अपना प्रोनाउंसिएशन नहीं बनाना, लिसन टू द प्रोनाउंसिएशन, जो बातें मैंने समझाई हुई है आप लोगों को, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल की उर्दू आप लोग कर ले, इसकी आंसर शीट भी मैंने फॉरवर्ड कर दी आपको, ठीक है। और उसके बाद ये 3.1 और 3.2 आपका होमवर्क है। सर ये कैसे सॉल्व होगी, आइए ये देखिए, माइक के कंट्रोल्स में आपको दे रहा हूँ, जरा मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा 3.1 का, ताकि आप लोग इसको सॉल्व कर सके। इसका प्रिंट आउट जो निकलवा लेगा वो सबसे अच्छा काम करेगा। पीडीएफ है ये आपके ग्रुप में मैंने सेंड कर दी है ना, इसका प्रिंट आउट निकलवा कर आराम से इसको सॉल्व करें। यस, बताइए नंबर 1 में क्या आएगा, ही माइक के कंट्रोल, वेरी गुड। 2, नंबर 2, I do not think you are right. I don't think you are right. Right. I don't think you are right. Number 3. Have we enough time? Do we have enough time? Do we have enough time? Yes. Do we have enough time? Number 4. I don't cereal in the morning. I eat cereal. क्या करना है हमें, या तो हमें प्रेजेंट सिंपल की फॉर्म्स लगानी है, ठीक है ना। I eat cereal in the morning. I eat cereal, no change. I eat cereal in the morning. ये एक्सरसाइज आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, इसके आंसर्स आपके पास अवेलेबल है बहुत सारे। ये प्रैक्टिस अगर आप लोग कर लेंगे ना, बिलीव इन मी, योर प्रेजेंट सिंपल विल बी परफेक्ट, ठीक है। 3.3 भी आपका है, 3.4 मैं करवाऊंगा, 3.4 मैं अपने साथ सॉल्व करवाऊंगा। ये काम आप लोगों को आज रात को नहीं करना है, एक हफ्ते का काम है ये, 3.4 तक। फिर उसके बाद हम एक नया 3.5 के बाद ये फिर हमारा ये यूनिट शुरू हो जाएगा। जब हैव टू पढ़ेंगे तो फिर जब वो सॉल्व कीजिएगा। अभी प्रेजेंट सिंपल चल रहा है, यू हैव टू सॉल्व ऑल दिस स्टफ। अगर आपने इसको पेंडिंग कर दिया तो फिर ये बेकार हो जाएगी बुक, फिर काम पेंडिंग ही होता रहेगा सारा, और ये फिर पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, फिर वो पूरी बुक रखी रह जाएगी। सो कीप सॉल्विंग। व्हाट्सएप चेक करें, अभी आपके पास कुछ वीडियोस के लिंक्स आ रहे हैं,
और आज का लेक्चर आ रहा है उसको दोबारा पढ़िए, ठीक है। और फिर मुझे कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा। कल हर स्टूडेंट प्रेजेंटेशन लिखेगा लाजमी, और मुझे स्क्रीनशॉट भेजेगा क्लास से पहले। और अगर कोई कल गायब हुआ तो फिर आपको पता है मुझे गुस्सा आता है तो कैसा आता है। अभी नहीं देखा आप लोगों ने गुस्सा, अभी सिर्फ ट्रेलर देखा था उस दिन। अब यू हैव टू, देखिए आई टेक माय स्टूडेंट्स वेरी 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 पर्सनल। लोग कहते हैं तुम स्टूडेंट्स को इतना सीरियस क्यों लेते हो। मैं पैसे लेता हूँ तो मैं उसको हलाल करने की पूरी कोशिश करता हूँ। यू हैव ज्वाइन टू लर्न स्पीकिंग, तो अब आप आए अपनी मर्जी से, जाएंगे मेरी मर्जी से, और पढ़ेंगे भी मेरी मर्जी के मुताबिक, ठीक है बेटा। तो कल रात को मिलते हैं दोबारा ठीक 9 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।